Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Learn with Sabi. Here I am going to teach you different topics related to your English grammar, basically comprising of your matriculation syllabus SSC 1 and SSC 2 paper. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the latest notifications of my videos. Today the topic which I'm going to teach you is called figures of speech or figurative language techniques or literary devices. These are all names for the same thing. So first, before studying figures of speech, we need to know what does figures of speech mean, what is their function and what does they mean. A figure of speech is a word or a phrase that possesses a separate meaning from its literal meaning. Literal means actual meaning, so they possess a different meaning from their actual meaning. That how they are being used in the written material or in the spoken material, they mean different from their actual meaning. There are different kinds of figures of speech. बहुत सारे तरह के figures of speech होते हैं, ठीक है? But I'm going to teach you today only the basic ones, which are important from your exams point of view. So here I'm going to teach you simile, metaphor, alliteration, imagery, personification, irony, hyperbole, antithesis, and oxymoron. So the first thing we are going to study is simile. What does a simile mean? इसको आम ज़ुबान में आप तशबीह भी कहते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देना. So a simile is a word or a phrase used to compare two different objects using the words like or as. The most important thing which you need to keep in mind while doing your paper is that simile is a word or phrase which is used to compare two different things. दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको आपस में मवाजना करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हम simile का यूज़ करते हैं. Most important thing is that it must have the word like or as. Like और दूसरा word है as. ये दोनों words आपको लिखे हुए नज़र आएंगे उस sentence के अंदर where the two things are being compared. Examples like he is brave like a lion. वो शेर के जैसा बहादुर है. ठीक है, अब हम यहाँ उसको बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की वजह से उसको शेर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लायन के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग अ सिमिली एंड द वर्ड लाइक इज रिटन ओवर हियर. शी इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स. वो लोमड़ी की जैसी चालाक है, तो हम उसकी कनिंगनेस की वजह से उसको एक फॉक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. शी, वी आर कंपेयरिंग अ गर्ल विद अ फॉक्स बिकॉज ऑफ द कनिंगनेस शी इज़ हैविंग. I was wandering lonely like a cloud. This line I have taken from the poem Daffodils, written by William Wordsworth. Here the poet is comparing himself with a cloud because he is also wandering lonely like a cloud. He climbs like a monkey because he is climbing in the manner similarly in which the monkeys climb. So we are comparing him with a monkey. ठीक है, हम उसको एक मंकी के साथ तशबीह दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो मंकी के जैसे क्लाइंब कर रहा है. Her eyes are as deep as the ocean. उसकी आँखें इतनी गहरी हैं जैसे कि समंदर. So we are comparing her eyes with the ocean because of the depth they have. So simile जो होती है यहाँ पर basically आम लैंग्वेज में अगर आपको समझाया जाए तो like और as का वर्ड लिखा हुआ होगा और यहाँ दो चीज़ों को आपस में compare किया जाएगा. So move on to next. Next is metaphor. Metaphor is just like the simile. But the basic difference is that here we are also making comparison between two things but without the use of word as or like. यहाँ as or like का word use नहीं होगा, but still we are comparing two things with one another. Examples: the camel is the ship of the desert. Camel जो है वो desert का ship है. ठीक है, अब यहाँ हम उसको because जिस तरह से ship water में easily sail कर सकता है, camel भी desert में easily move कर सकता है. So because of the similar qualities we are comparing the camel with ship. ठीक है, but the word like and as is not used. He is a lion. वो शेर है means वो बहादुरी की वजह से या अपनी qualities की वजह से शेर के जैसा है.
but we have not used the word like or as. But still we are comparing him with alone. You are the apple of my eyes. ठीक है, तुम मेरी आँखों का तारा हो. So again we are comparing someone with the apple of my eyes because of the dearness they have with us, because of the love we have for them. Love is a battlefield. Now we are comparing love with a battlefield. It doesn't mean that love में भी जो है वो कोई आप पे जंग हो रही होगी. Because of the difficulties that love has, we are comparing it with the battlefield. Ali is a couch potato. Because of the laziness of Ali, we are comparing him with a potato. You light up my world. It doesn't mean that when you enter into my room or when you come near me, you switch on all the lights. Again, we are comparing some qualities with the lightning. ठीक है? The next thing is alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant sound in a sentence. Now you're familiar with consonants and vowels. A, E, I, O, U. These are the vowel letters, and apart from them, all other alphabets are called consonants. ठीक है? So जब आपके sentence में same consonant sound repeat होता है, that is called alliteration. For example, I feel like making melodies in my mind. Now you can see that there are three words with the starting with the letter M. Making, melodies, sorry, four. Making, melodies, my and mind. These are all starting with M. So M is a consonant letter in here. That consonant sound of M is being repeated. Next is she sells seashells by the seashore. Again, S letter, the sound of S letter is being repeated in she sells seashells seashore. He like French fries, French fries. F sound is being repeated. My mind makes marvelous moves. M sound is being repeated in the five letters we are having. He is going to get the golden goose. G letter sound is being repeated. So alliteration में क्या होता है, आपको same sound repeat होता हुआ नजर आएगा. Next is imagery. It helps the reader to make a picture of an event or scene through the visual sense or as well as the sense of hearing, touch, smell or taste. यहाँ पर क्या होगा? The writer is trying to make or the speaker even is trying to make the image of something in your mind. ठीक है, imagery image से निकला है. आप उस चीज़ को जब पढ़ते हो तो आप अपने माइंड में उस चीज़ की एक पिक्चर बना सकते हो, मंजर कशी कर सकते हो, वो सीन आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा. तो तब कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? इमेजरी की. फॉर एग्जांपल, deep dark forest. When I say I was standing yesterday in a deep dark forest, so you can imagine how a deep dark forest can look like. ठीक है, तो you can make the image of deep dark forest in your mind just by looking at these words. Lush green trees. And these first two imageries are using your sense of vision, visual sense, देखने की सलाहियत. Next third is sweet as sugar. यानी कि चीनी की तरह मीठा, गुड़ की तरह मीठा. So it's using your sense of taste. Smooth as silk. It's using your sense of touch. Sweet fragrance. अच्छी खुशबू. It's using your sense of smell. So by using your senses, you are able to create an image of that thing in your mind. You can sense that how it looked like. Next is personification. In personification, inanimate यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन एज एनिमेट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, वो एट्रीब्यूट्स जो लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे डांस करना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, गुस्सा करना, हंसना, रोना. ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट कर देते हैं. सो वो करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स के होते हैं, हम उनको नॉन लिविंग थिंग्स को एसोसिएट करवाते हैं. तो तब पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है. एग्जाम्पल, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत ईजाद की माँ है. अब ज़रूरत ईजाद की माँ लिटरली नहीं है, ठीक है, वी आर सेइंग इट दैट जब आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आइडिया इन्वेंट कर लेते हो अपने माइंड में. तो ये क्या है, मदर होना
एक ह्यूमन ट्रेट है, हम नेसेसिटी को मदर कह रहे हैं। तो नेसेसिटी एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। सो वी आर गिविंग दैट थिंग जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एनिमेट चीज़ों की क्वालिटीज़ को एसोसिएट करवा रहे हैं। The candle flame danced in the dark. Now we know that dancing is a human quality and candle flame doesn't dark, it just flicker with the air. So हम कह रहे हैं कैंडल फ्लेम जो है वो डांस कर रहा था। तो डांसिंग ह्यूमन क्वालिटी, उसको हमने एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरफ एसोसिएट करवाया है। विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। हवा जो है वो सरगोशियाँ कर रही थी और फैला रही थी रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको पता है हवा जो है वो विस्परिंग नहीं करती है, इट जस्ट फ्लोज। तो विस्पर करना ह्यूमन क्वालिटी है, हम उसको विंड के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं। विंड जो है वो एक नॉन लिविंग फिनोमेना है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, सॉरी द स्पेलिंग ऑफ स्टोरी ओवर हियर आर रॉन्ग, STORY स्टोरी, कहानी। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, स्टोरी जो है वो नेक्स्ट पेज पे जंप करके गई। तो जंपिंग को पता है कि एनिमल्स या ह्यूमंस कर सकते हैं, एनिमेट चीज़ें करती हैं। स्टोरी इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो हम उसको एसोसिएट करवा रहे हैं। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, अलार्म जो है वो येल नहीं करता, रिंग करता है जस्ट। सो येल ह्यूमन बींग्स करते हैं। अगेन वी आर गिविंग द quality of an animate object to an inanimate object, associate करवा रहे हैं, तो this is personification. Hope students you are able to understand whatever I'm trying to teach you. जहाँ भी आपको difficulty हो, so you can ask me in the comment section. Next is irony. Irony is a mode of speech in which the real meaning is exactly opposite of that is stated. आयरनी क्या होती है आम ज़बान में, इसको आप सार्केस्टिक, जब हम सार्केस्टिकली व्हेन वी से समथिंग, तंज़िया अंदाज में जब हम कुछ कहते हैं तो उसको आयरनी कहा जाता है। यानी जो हम एक्चुअली कह रहे हैं उसका रियल मीनिंग उससे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमिंग टू अ बिग मैस एंड सेइंग इट्स ग्रेट टू बी बैक। जब आप घर आएँ, आगे ढेर सारा कचरा हो, बिखरा हो घर, और आप कहते हैं इट्स ग्रेट टू बी बैक, तो इट डज़न्ट मीन दैट यू आर एक्चुअली सेइंग इट्स ग्रेट टू बी बैक, इट मीन्स आप सार्केस्टिकली बोल रहे हैं, अननोए होकर। सो लिटरल मीनिंग जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द रिटन सेंटेंस। वॉकिंग इन टू एन एम्प्टी हॉल एंड सेइंग इट्स टू क्राउडेड, एक खाली जगह पर आप एंटर होते हो और कहते हैं इट्स टू क्राउडेड, सो यू आर सार्केस्टिकली सेइंग इट, एक्चुअली देयर इज़ नो क्राउड। डिलीवरिंग अ बैड न्यूज़ बाय सेइंग इट्स अ गुड न्यूज़, सो आप कोई बुरी खबर लेकर आए हैं और आप कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी खबर है, ठीक है। सो आप सार्केस्टिकली कह रहे हैं, एक्चुअल में वो अच्छी नहीं है, तो रियल मीनिंग डिफरेंट है। टेलिंग अ क्वाइट ग्रुप डोंट स्पीक एट ऑल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऑलरेडी खामोश बैठा हुआ है एंड यू आर सेइंग टू देम डोंट स्पीक एट ऑल, सो यू आर आयरॉनिकली सेइंग दैट, एक्चुअली नॉट यू आर ट्राइंग टू से दैट। तो आयरनी में क्या होता है, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिटन है चाहे वो स्पीच में है, चाहे आप बोल के कह रहे हैं या चाहे आप लिख के कह रहे हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट है फ्रॉम दोज वर्ड्स विच यू आर सेइंग। Next is hyperbole is an exaggerated claim or the statement that adds emphasis without the intention of being literally true. Hyperbole में क्या होता है, it's just an exaggerated claim or statement, जब पोइट या स्पीकर चीज़ों को exaggerate करने के लिए जो है वो बोलता है, अपनी बात को exaggerate करके बयान करता है, just to have more emphasis on the listener or the reader, that is technique being used is called hyperbole. For example, I am so hungry that I could eat a cow, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं गाय भी खा सकता हूँ, या I could eat a horse, मैं एक पूरा घोड़ा। So you can't eat it literally, so literally you does not mean it, you are just trying to exaggerate कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं। I love you to the moon and back. Now there is no love to the moon and back. You're just trying to exaggerate the feelings you have for someone. I am buried under a mountain of work. Now when you have a lot of work to do, you're not buried under a mountain. It just means that you have so much burden of work. I am dying of thirst. मैं प्यास से जो है वो मर रहा हूँ। सो एक्चुअली जब आपको प्यास लगती है आप मरते नहीं हैं, यू कैन कंट्रोल दैट फीलिंग, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू एग्जैजरेट कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। आयरनी को आपने हाइपरबोल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज दिस टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आयरनी मीन्स दैट आप क्या कर रहे हैं, सार्केस्टिकली कोई बात बोल रहे हैं, और हाइपरबोल मीन्स कि आप अपनी बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग सार्केस्टिक। Antithesis. In antithesis, words or ideas are brought into contrast by being balanced against one another. Two different ideas are brought into one sentence
and they are also balanced in that sentence. दो opposite ideas होते हैं एक ही sentence के अंदर, वो एक दूसरे को balance out कर देते हैं, तो ये होता है antithesis. Example, to err is human, to forgive is divine. गलती करना इंसानों का काम है और माफ़ कर देना जो है वो खुदाई सिफ़त है. तो यहाँ पर दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिनको कि बैलेंस किया जा रहा है इन द सेम सेंटेंस. यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल. मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग. नाउ लव इज़ एन आइडियल थिंग, यू नो दैट लव एक आइडियल चीज़ है, लेकिन मैरिज एक रियल चीज़ है. ठीक है, यहाँ लव और मैरिज को दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के तौर पर, अपोजिट चीज़ों के तौर पर बयान किया जा रहा है, बट इन द सेम सेंटेंस दे आर बीइंग बैलेंस्ड आउट. तो एंटीथेसिस में क्या होता है, दो डिफरेंट आइडियाज़ को एक सेंटेंस में इस तरह से बोला जाता है या लिखा जाता है कि वो दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं. The next is oxymoron, and it's the last one. Oxymoron is a figure of speech that combines two contradictory words or terms together with opposite meaning. Now, also, you don't need to confuse antithesis with oxymoron, because in oxymoron, two opposite words are combined together, having the opposite meaning. And in the antithesis, two opposite ideas are put together in a sentence by balancing them out. वहाँ पर दो आइडियाज़ होंगे जो एक सेंटेंस में होंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे. ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, विद अपोजिट मीनिंग. फॉर एग्जांपल, ओल्ड न्यूज़, पूरा ओल्ड है एंड न्यूज़ मीन्स नया, तो पुराना नया दोनों इकट्ठे. डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग मीन्स समथिंग जो कि आपके कानों पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ी चीज़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है साउंड, वो वाला डेफनिंग होता है. तो साइलेंस आपको पता है, खामोशी तो कभी डेफनिंग नहीं होती है. तो दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स. ओरिजिनल, कॉपी. Copy is never original and original is never copy, so these two words are being put together. They are opposite in the meaning. So oxymoron technique is being used. Then next is seriously funny. Funny things can't be serious and serious things can't be funny. वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी मीन्स हकीकत होती है, वो एक्चुअल होता है जो हो रहा होता है. वर्चुअल मीन्स समथिंग जो कि आप कंप्यूटराइज सिमुलेशंस होते हैं, आपने क्रिएट की हुई होती है चीज़, वो रियलिटी नहीं होती है. सो वर्चुअल रियलिटी में आप क्या करें, अगेन टू अपोजिट वर्ड्स को एक जगह पर पुट कर रहे हैं. So this was the last topic of figure of speech. I hope you have understood all of these figure of speech clearly. Now, if you have any question or any difficulty in them, you can ask me in the comment sections. I would like to explain in the further videos. So again, at the end, I would like to say please subscribe my channel and hit the bell icon, and so that you can enjoy further exciting videos. And if you have liked this video, please hit the like icon also. Thank you so much for your time. Have a good day. Allah Hafiz. Bye bye.